Hi there, I'm Sumita Karir, and as you can see, I'm taking a break from work and using this percussion massage gun by Hyperice. It's called Hypervolt Go 2. आपने देखा होगा कि ऐसी जो मसाज गन्स होती हैं वो यूजुअली एथलीट्स या प्रो स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज़ करते हैं. बट यू नो व्हाट, द सरप्राइज इज कि ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज़ एनी काइंड्स ऑफ मसल क्रैम्प्स, पेन्स एंड एक्स, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इन ऑफिस, at home, or even if you're traveling. So guys, this one is for 18,999. But the question is कि क्या आपको इतने पैसे spend करने चाहिए ये मसाज गन खरीदने के लिए? All of that in this review video, so stay with me. एथलीट्स के लिए प्रो मसाज गन्स बनाने के बाद Hyperice, the company that builds such fitness devices, has made one for us to use, for all of us. The ones who work out, the ones who are like me, always glued to their office chair the entire day, the one who run, gym, and the ones who plan to run a marathon or work in office, stay at home. Basically, aches और pains जिसको हो सकते हैं, ये उन सब के लिए है. सो मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी, बट लेट्स फर्स्ट गो थ्रू सम ऑफ द मेन फीचर्स एंड डिज़ाइन. नाउ डिज़ाइन, एज यू कैन सी, इट्स वेल बिल्ट. इसका इन हैंड फील जो है वो काफ़ी अच्छा है. इट्स अर्गोनॉमिकली बिल्ट और काफ़ी इंट्यूटिव इन द सेंस कि यहाँ पे ही आपका पावर बटन है और यहाँ पे जो स्पीड के मोड्स हैं, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कंट्रोल दिस फ्रॉम हियर इवन वाइल यू आर यूजिंग दिस. और आप बात कर लेते हैं इसकी अटैचमेंट्स की. तो दो अटैचमेंट्स है. पहला तो आपने देख ही लिया है. जो दूसरा अटैचमेंट है, दिस इज इन अ वेरी बुलेट फॉर्म और ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं है इसमें. ऑनेस्टली ये थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा मे नॉट बी एवरीबडीज कप ऑफ टी बिकॉज इट्स very solid. इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंटेंस है. सो मे बी Hyperice could have added a few more attachments, बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा अगर अटैचमेंट्स होंगी तो उससे पोर्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो अफेक्ट होगा. सो जिसका फ्लैट हेड है, दैट्स फॉर योर आर्म्स, योर थाइज, योर लेग्स और मे बी द बॉटम ऑफ योर फीट. और ये जो है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ग्लूट्स. नाउ अगर स्पीड्स की बात करें तो आपको पावर बटन के यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे. ये लो स्पीड का है, मीडियम स्पीड एंड इट्स वेरी हाई स्पीड. सो ऑनेस्टली आई हैव यूज्ड ओनली मीडियम स्पीड एंड लो स्पीड बिकॉज इट इज़ दैट इफेक्टिव दैट यू डोंट नीड टू सॉर्ट ऑफ रियली गो ऑन to the high speed mode unless and until you are an athlete and you're gymming regularly और आपको उस पर relaxation चाहिए. उसके बाद इसमें है Hyperice का quiet glide technology, which basically means that when it's on, it's not going to make a grrr sound जो आपको usually पुरानी मसाजिंग की जो clunky devices होती थी उसमें आती है. अब आता है point, who is this not for? Well, it's not for pro athletes. उनके लिए जो है Hyperice के पास ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस हैं, ज़्यादा पावरफुल मसाज गन्स हैं और बाकी इक्विपमेंट है बिकॉज दे विल नीड मोर मसल टोनिंग बिकॉज दे हैव अ हायर मसल मास. नाउ आई हैव टू गिव यू हियर अ वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आपको कोई सीरियस इंजरीज हो रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि इसको यूज़ करने से ठीक हो जाएगा. इन दैट केस ओनली गो फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइस. सो बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी भी लो होने वाली है. इट बेसिकली टेक्स 3-4 hours to get completely charged from 0 to 100%, which I honestly feel is a lot of time. But on the flip side, if you see, it lasts for 3 hours. Battery is something that maybe Hyperice can work on for future models. Now let's come to the most important part of the video, its performance. Guys, honestly saying, I have been using it for almost 3 weeks and performance में इसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी. In fact, that is because of the 40-watt motor that it has, and it's slightly heavy also, so basically which means that ample pressure will be put on your arms or your muscles or wherever else you want to massage. Efficiency जो इसकी है, performance जो इसकी है, I don't think Hyperice is compromised on that at all. Now it's also got ease of use because it's very simplistic. There are no complicated mechanisms here. You have a power button, you have 3 levels, you have 2 attachments and that's all. But just be careful around your bones क्योंकि bones में इसका intensity ज़्यादा है तो आपको लग सकता है. और अगर आपको अपना fitness related data भी चाहिए या फिर आपको कुछ exercising routines चाहिए, ease of use ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको एक app भी मिलता है, Hyperice app that you can download. It will give you customized workouts almost like a personal trainer would. It would also give you other types of data as well.
So in the end, what works? Well, it's ergonomical design, it's easy to use, and its performance. What doesn't work? Well, maybe the battery could have been a little better, or अगर case दे देते इसके साथ तो I think ये भी better हो जाता. So overall, I would treat this as an investment because obviously the pricing is a little on the higher side. 18,999 है जो maybe हर कोई afford नहीं कर सकता. I hope Hyperice, which is taking great strides as far as fitness tech is concerned, थोड़ा सा affordable बनाएगा अपनी इन devices को. So guys, I need to go, but you stay tuned to Gadget Times by Times Now for everything on tech. This is Sumita Karir signing off.